for all of you. Meanwhile, please furnish these three details. Your name, okay, in one single message. Your name, your parents' name, and contact number in the chat window. Okay. We will be sending the recording in their WhatsApp number. Okay. And we will also call them for feedback. So Greek alphabets are, why we are introducing Greek alphabets here? Because we are using these Greek alphabets using as symbols to represent the angles of the triangle. हम ग्रीक अल्फाबेट्स को ट्रायंगल्स के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्रीक अल्फाबेट्स. सो दीज आर फ्यू ऑफ देम. फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा, अल्फा बीटा, थर्ड इज गामा, फोर्थ इज डेल्टा, फिफ्थ इज थीटा, राइट, एंड लेट्स से सिक्स्थ इज फाई. Sixth is 5. Okay. So how do we represent it? Give me a minute. Give me a minute. So this is how we represent them. Alpha is represented like this. Beta is represented like this. Gamma is represented like this. Delta ऐसे होता है. Theta is given like this. And phi is denoted like this. So we will be using these symbols to represent the angles of the triangle. Right? Which triangle we will be using? We will use a right angled triangle in today's session. देखो शुरू कर रहे हैं हम, है ना? We are just starting. So since we are just starting, क्या करना है? We will go very slow. So don't worry about, this is a very new chapter to all of you. So don't worry about it. So this is a right angle triangle. Let's say this angle is theta. So I am using this Greek alphabet to represent angle theta. ठीक है? Now, please pay attention. The side opposite to theta, the side opposite to theta is which side? BC. Yes or no? All of you. Ojas, Rashi, Dvita, Viraj, Yes, sir. Yes, sir. SB Yadav, Aprajita, है ना? So this is the side opposite to angle theta. So this side is perpendicular for this angle theta. Okay. We will write whenever we are using angle theta, whenever we are using angle theta, whenever we are using angle theta, we will use this side as perpendicular for the triangle. Okay. Now, the other side is, this side is base, capital B, right? This side is hypotenuse. All of you are aware about it, है ना? And we denote it by H. I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को. Yes or no? Yes, sir. No doubt. है ना? No doubts. Very good. Okay. So now I am introducing you some trigonometric functions. Trigonometric functions. चलो. First of all, tell me what are functions. Any one of you who can tell me what are functions. ओजस, फंक्शन क्या होता है बेटा? जो आपको समझ में आता है बोलो. देखो डरना नहीं है, ठीक है? क्लास में इंटरेक्ट करो, पूछो, ठीक है? बात करो. नॉर्मल बात करते हैं ना अपने दोस्तों से, वी टॉक, है ना? वैसे ही बात करना है कि कुछ क्वेश्चन है तो उसको सोचो क्या होता है. व्हाट आर फंक्शंस? विता, ओजस, राशि, एनीवन हु इज हियर? गुरनूर सिंह, जननी मूर्ति, एसबी यादव. यस,
See, I can only talk to those who Work can. is known as Sorry, work is known as function. Work is known as function. work is known as function. Okay, थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं इसको. This अच्छा देखो, I'll give you one example. What is function of a remote? टीवी का remote. What does it do? Any work, any to specific work. control the channel of the TV. Very good. So it is doing a specific work, right? So work is known as function name. Any specific work done by any object or any person or anything, right? That is the function. है ना? Specific चीज, specific work assigned. Understood? Yes. है ना? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑपरेट्स ऑन सर्टन इनपुट. यस और नो? जैसे टीवी का फंक्शन किस पे ऑपरेट करता है? ऑन टेलीविजन, राइट? इफ यू हैव अ टेलीविजन का रिमोट बट यू डोंट हैव अ टेलीविजन, वो फंक्शन किस पे करेगा? किस पे ऑपरेट करेगा? किसी पे नहीं. तो सिमिलरली, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. यस और नो? हाँ Yes. या ना Yes, बोलो. ma'am. Yes. हाँ. तो यहाँ पे भी देर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक functions, right? So what are these trigonometric functions? There are 6 basic trigonometric functions. First one is sine. In short, it is written as, so this is sine. In short, it is written as sin. Okay. Then there is cosine. In short, it is written as cos. Third is tangent. It is tan in short. Fourth one is cosecant. In short, it is written as cosec. Fifth one is secant. In short, it is written as sec. Sixth is cotangent. In short, it is written as cot. Okay. So these are 6 basic trigonometric functions. Now these functions, the trigonometric functions operates on the above trigonometric functions operate on the angles of the triangle. ठीक है बेटा? ये किस पे ऑपरेट करते हैं? एंगल पे. तो सबसे पहले एक ध्यान रखना है, दिस इज नॉट सिन, रीड इट एज साइन. क्या पढ़ेंगे इसको? साइन बोलेंगे. Side. ठीक है. राशि, ओजस, नंदिता, समझ आ रहा है बेटा? गीता, Yes, sir. एस बी Yes, यादव, sir. Yes, sir. एस बी यादव. यस सर. हाँ, तुम कौन सी क्लास में हो बेटा? क्या नाम है तुम्हारा और पूरा? 8th क्लास, संजीव बहादुर यादव. संजीव. ओके सर. तुम्हारा कैमरा नहीं चल रहा है संजीव? यस, इट्स नॉट वर्किंग. ओके, नो वरीज. सो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेकंड, कॉट. So now let's see how, what are the values of these functions, how they are given. So sine theta is given as perpendicular upon, the value of it is given as perpendicular upon hypotenuse. Second is cos theta. It is given as value of base upon hypotenuse. Third is tan theta. It is given as sine theta upon cos theta, and this is perpendicular upon hypotenuse upon base upon hypotenuse, or it is perpendicular upon base. Fourth is cosec theta. Cosec theta is nothing but 1 upon sine theta, inverse of sine theta. So this is h upon p, right? Fifth one is sec theta. Sec theta is inverse of cos theta. This is h upon b. And the last one is cot theta. It is 1 upon tan theta, inverse of tan theta. And this is b upon p. ठीक है बेटा? This is how we find the values of these functions operating on a specific angle. Understood?
ओजस, राशि, समझ आया बेटा Yes, आप लोग? yes, sir. वेरी गुड। पक्का ना? देखो समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप लोग, और समझ आया है तो फिर लिखना है आगे, है ना? एक बात मुझे बताओ, इफ दिस इज द एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज एंगल फाइव, which side will be perpendicular for them, for this angle? AB. 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 Shabash, very good. So the side opposite to the angle is perpendicular for that angle. Very good. बहुत बढ़िया. So if you have understood this, just make notes. ठीक है, and please make it neatly. Treat this as your first session for foundation program. लिखिए. And once you are done, I am just floating a poll, launching a poll. आप लोग please answer the poll once you have noted only, right? If you have any doubts, you can ask. Once you have noted it, please answer the poll, okay? Those of you who have not given the details, Rita, Gurnoor Singh, Viraj, Naresh, I think Aprajita has given. Yes, Aprajita has shared the details. Please share the details of like this. Nandita, you also. No, Nandita has shared. Okay. SB Yadav, आप लोग अपने पेरेंट का नाम, उनका व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम एक ही मैसेज पे लिख के भेजिए, ठीक है? My team will connect with them to share the feedback.
Dhruvjot, Viraj, Drishi, Vita. Okay, noted. Noted, yes or no? All of you. Yes, sir. ओजस हो गया बेटा? No, sir. लिखो लिखो जल्दी लिखो. राशि डन. No, sir. 2 minutes. ओके लिखो लिखो. If you have noted, please answer the poll. See, we will be sharing the recording also, so don't worry. Okay, Gurnoor Singh Walia. Okay, so I hope all of you have noted this slide. So once you are aware about trigonometric functions, let's discuss the quadrants of a circle. Let's discuss the quadrants of a circle. So I hope all of you are aware about quadrants. So these are the 4 quadrants of circle. This is first one, second, third, and fourth. This is 0-degree angle. This represents 90 degrees. This is 180 degrees, 270, and this completes the circle 360 degrees. These angles, they are at the boundaries of the quadrants. Can you see this? Yes or no? All of you. All of you can Yes. see Yes, Yes, angles are sir. the boundaries. Yes, sir. These are called as reference angles. These are called as reference angles. Okay, this is a reference angle. This is a reference angle. And this is also a reference angle. So between 0-degree and 90-degree, the first quadrant lies. Between 90 and 180, the second quadrant lies. Between 180, 270, third quadrant lies. And between 270, 360, the fourth one lies. Now, as there are reference angles, there are some standard angles also. So what are those standard angles for every quadrant, right? So there are 3 standard angles in each quadrant. Okay? These are the standard angles because they are widely used. Okay? 30, 45, and 60 degrees in the first quadrant. The angle is measured from 0 degrees. So this is 30. All of you are aware about the angles, right? Yes or no? Yes, sir. So 30, Yes. 30, 45, 60 degrees. These angles are called as standard angles of the first quadrant. ओजस, राशि, नंदिता, SB यादव, गुरनूर सिंह, विराज, दृषि, MA अंसारी, DGM सिविल, गेवरा. भाई अंसारी जी, ये आप नाम बदलिए अपना प्लीज. Student, please write your name. Vita, understood? All of you. The standard angles and reference angles. Yes, yes, sir. sir. Okay. Okay. Yes. Now, every quadrant has their own standard angle. Every quadrant has its own standard angle. So to find the standard angles of the second
third and fourth quadrant, what do we do? Sir, at 15. सुनो मेरी बात. First, add the standard angles. Add the standard angles of the first quadrant to the smaller reference angle of the respective quadrant. ठीक है. तो क्या मतलब हुआ इसका? If I want to find standard angles of second quadrant, which one of these two is small? Second quadrant का reference angle कौन है? 90 and 180, right? 90 and 180. Which one of these two is smaller? 90. 90. 90. And So 290, add the standard angles of first quadrant. 90 plus 30, 90 plus 45, 90 plus 60 degrees. So this is 120 degrees, 135 degrees, 150 degrees. Clear? Yes or no? Yes, sir. So these Yes. angles, all of them, they lie in the second quadrant and they are standard angles for second quadrant. There is another method, right? Which is either you do the first step, second step is subtract the standard angles of the first quadrant from the larger reference angle of the respective quadrant. रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट मतलब जिस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा लार्जर रेफरेंस एंगल है? 180, राइट? हेलो मेरे प्यारे yes, बच्चे, sir. तुमको हाँ ना. तो व्हाट वी डू इज subtract from 180, subtract 60, 45 and 30. You get these angles, right? So if you have understood it, all of you understood how to find the standard angles of each quadrant. Yes, sir. Ojas, Rashi, Nandita, SB Yadav, Gurnoor Singh, Dvita, Yes. Yes, sir. Asad, Nandita. Okay. Now, if you have understood it, first, what you will do is find the reference, find the standard angles for third and fourth quadrants and write your answers in the chat window. First, you do this exercise, then you copy this slide. Okay? पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करके देना है और उसके बाद आप लोगों को अच्छा आंसर आपके चार्ट पे लिखना है और उसके बाद आपको ये स्लाइड नोट करना है. करिए जल्दी से फटाफट. प्लीज बी क्विक. हाँ, ढीलू टाइप काम नहीं करना, फटाफट करो बेटा काम. शाबाश. Gurnur, you are in which standard? 9th. Okay, good. नोट नोट बाद में करना है भाई, पहले ये लिखो. फाइंड द स्टैंडर्ड एंगल्स निकाल के दीजिए मुझे आप लोग एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट विंडो. वेरी गुड मोहम्मद असद, वेरी गुड. वेरी गुड राशि, शाबाश बेटा. शाबाश शाबाश. देखो दो लोगों ने निकाला है, जल्दी से निकालो सब लोग.
एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। वेरी गुड ओजस, वेरी गुड बेटा, शाबाश। वेरी गुड गुरनूर, शाबाश। वेरी गुड। रेस्ट ऑफ यू प्लीज बी क्विक। द्विता, एस बी यादव, शाबाश। वेरी गुड बेटा। देखो क्लिक कर रहा है ना, ये समझ में आ रहा है। राशि, राशि एक गड़बड़ हुई है बेटा, देखो जरा। सर वो सीक्वेंस। नहीं 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 नहीं, सीक्वेंस नहीं, बीच वाला देखो। नंदिता, वेरी गुड, शाबाश बेटा। यू हैव डन बोथ, वेरी गुड। यस सर, वो 330 होना चाहिए था। हाँ हाँ, उसको ठीक कर लो, बस एडिट कर लो उसको। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, तुमको आ गया ये, ठीक है, गुड। वेरी गुड असद, शाबाश। ओजस, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ है बेटा? जल्दी से, और नोट करना है उसके बाद, ठीक है? प्लीज मेक नोट्स। सी, डोंट मिस एनी ऑफ द स्लाइड्स, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल रिवाइज, ठीक है? डोंट टेक इट लाइटली, दिस इज, ट्रीट दिस एज योर फर्स्ट सेशन ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम, ओके? नोट इट क्विकली। Very good, Gurnur. Shabash. Please make notes, and once you have noted it, once you have completed noting the slide, opt for the poll. Answer the poll. Please be quick. I hope most of you are done writing, noting it. Ojas, Rashi, Nandita, हुआ बेटा? नो सर। अच्छा, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, हाँ? Yes, थोड़ा sir. सा। Written. Just answer the poll, huh? Please answer the poll once you are done. हो गया ओजस? Yes. शाबाश। राशि, डन? यस सर। ओके, नंदिता, एस बी यादव,
गुरनूर सिंह, Yes, sir. रीता हो गया बेटा? Yes, sir. Done. ओके. असद. Okay, I'll share the recordings also since you have sent me the details of your parents' WhatsApp number. So we will be sending the recording to their to their WhatsApp detail. Okay, the link of the recording. So don't worry. So this is how we find the standard angles. Why they are called as standard angles? Because they will be used very frequently in trigonometry. Okay. Now comes the, let's see some more attributes of the circle. Okay, the quadrants of the triangle. Please pay attention. So we have these four quadrants. This is, I am writing all here, all, sine, tan, and cos. Now, what does this mean? ठीक है? So, it means the trigonometric values for first quadrant, right? I'm writing for the first quadrant, so I'll mention it here first. The trigonometric values का मतलब क्या हुआ बेटा? साइन, कॉस, टैन. यही तीन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, बाकी सब तो उसके इनवर्स होते हैं. ठीक है? So we are discussing sine, cos, and tan. So the trigonometric values of all the angles in the first quadrant is positive. So sine of all the angles between 0 degree and 90 degree, cos of all the angles between 0 degree and 90 degree, and tan of all the angles between 0 degree and 90 degree is positive in the first quadrant. That's why I have written all. समझ आया आप लोगों को? जैसे साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 53 डिग्री, कॉस ऑफ 20 डिग्रीज, टैन ऑफ 18 डिग्रीज, टैन ऑफ 58 डिग्रीज, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे. आप लोग को समझ आया ये? ओजस, राशि, नंदिता, गुरनूर, Yes, Yes, sir. sir. ना बोलना है. अरे रिएक्ट तो करो. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड. Second is those of you who are new to this session, please, you are joined late. So if you share the details of your parents' contact number and name and your name, I'll share the recording with you. Second is only sign of all. Don't read it as sin, okay? Or you'll be committing a sin if you read it as sin. So it is sine. Only sine of all the angles is positive in the second quadrant. That means cos and tan will be negative. Clear? Only sine of all the angles is positive in the second quadrant. So starting from sine 90 plus degrees, sine 91 होता है, sine 180 0 होता है. So between sine 90 and sine 180, all the values of sine will be positive. So sine 91, 92, 93, 92.5, 103.5, 115 degrees, all these values are positive for sine. But cos क्या होगा? नेगेटिव होगा. tan क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्लियर? से यस और नो? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Shabash. Yes, sir. Shabash. So third one is only tan. That's why I have written tan in the third quadrant. Only tan of all the angles is positive in the third quadrant. ठीक है? That means cos and sin are negative. ठीक है बच्चों? अब तुमको समझ आ गया, इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा हूं मैं. ठीक है? और फोर्थ वाला क्या है? Cos. So in this case, only cos of all the angles is positive in the fourth quadrant. ठीक है? तो ये हो गया sin, tan, cos. अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूं करने के लिए. अगर आप लोग को ये समझ में आया है तो you have to write in front of these functions, these values, whether they are positive or negative. So sin 30 degree, cos 150 degrees, third is cos 330 degrees,
Fourth is tan 240 degrees. Fifth is tan 315 degrees. Sixth is sine 320 degrees. Just write positive or negative in front of them. For example, I'll give you one example. Sine of say 215 degrees. This angle lies in which quadrant? This angle lies in the third quadrant. Yes or no? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन Third पॉजिटिव quadrant. होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पे tan ही पॉजिटिव होता है, तो साइन इज नेगेटिव. सो राइट नेगेटिव लाइक दिस. सो डू दिस. Write the answers first in the chat window and then copy the slide. Do it quickly if you have understood it. If you have not, please ask what you have not understood. Okay? ओजस समझ आ रहा है बेटा? Yes. ये जितने 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 7th 8th वाले बच्चे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 9th वाले बड़े हो जाते हैं थोड़े से, उनको समझ में आता है. Yes, sir. Yes. शाबाश. चलो लिखो बच्चों जल्दी से. पहले आंसर करो इसको. हाँ, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव. Done, sir. वेरी गुड. आई हैव मेनी आंसर्स हियर. शाबाश. अरे एक साथ लिखा करो ना तुम लोग. एक एक, अब एक एक पढ़ू मैं ऐसे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओजस ने ठीक लिखा है. नेगेटिव. ओजस तुमने देखो ध्यान नहीं दिया बेटा. साइन हाँ 30. सर, पहला वाला पॉजिटिव रहेगा. हाँ, करेक्ट है ना? पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है. शाबाश. तीसरा भी पॉजिटिव है बिकॉज दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. दिस इज अगेन पॉजिटिव. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव. चेक करो सब लोग, आप लोग. और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो पूछिए. फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर नेगेटिव. वेरी गुड असद. शाबाश. राशि गिव्स फोर्थ एज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव. वेरी गुड. नंदिता वेरी वेल रिटन. वेरी गुड बेटा. शाबाश. गुरनूर वेरी गुड. वेरी गुड. शाबाश. So I hope all of you got this, right? चलो let's move to the Yes. next part of it. हाँ बोलो. Anything want to ask? Anyone wants to ask anything? नहीं पूछना है कुछ? Noted? Noted the slide? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश. So let's move to the next part of it. All sin tan cos हो गया. अब बारी आती है हमारे पास दो स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज टू ट्रायंगल्स. इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी इन लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री.
स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स, ठीक है, दो ही हैं. यू हैव टू मेमोराइज दीज टू ट्राइंगल्स. ओके, ऑल ऑफ यू. One is an isosceles triangle. One is an isosceles triangle, isosceles right angle triangle, and another one is a scalene right angle triangle. I hope all of you are aware about scalene and Yes, sir. Yes, isosceles, sir. right? So this is 90 degrees. This is 90 degrees. This is A, B, C. This is A, B, and C. Okay. So now remember, this angle is 45 degree. This angle is 30 degrees. This angle is 60 degrees. This angle is 45 degrees. Okay. And now remember the sides of the triangle. This side is 1. This side is 1. For isosceles triangle, the sides are 1 and 1. The hypotenuse will be root 2. Following Pythagoras theorem. Pythagoras जानते हो? ओजस आप जानते हैं Pythagoras? A square plus B square Yes, is sir. equal to Very C. good. शाबाश. तो यहाँ पे भी it's side AB square plus side BC square is equal to side AC square. So we are using this to find root 2. ठीक है? So these are the sides. In this case, start from the smallest side. It is 1. The biggest one is 2. So 1 and 2, this will be root 3. ठीक है? क्लियर है बेटा सबको? हाँ ना बोलो जल्दी से. Yes, ये sir. ट्रायंगल याद कर Yes, सकते sir. हैं तो जल्दी Yes. बोलिए. Sir, hypotenuse will not be root 3. Sorry, Why we are not taking hypotenuse root 3? we are not taking it. That's it. Okay. It's our wish. हाँ हाँ. Actually, this is the standard triangle. That's why we cannot change its place. ठीक Okay, है? sir. We are Yes. using these triangles to memorize the trigonometric table. ठीक है? तो Okay, sir. that's why we are fixing it. Hmm? Okay, sir. That's why Yes, I sir. said you have to memorize it. और कोई ऑप्शन नहीं बेटा हमारे पास. Okay, sir. तो अब देखो अब क्या करोगे. अब क्यों ये आसान था. ठीक है. Why it will help, it will make our life easier. So if I ask you to find sine 30 degree, please pay attention, all of you. Don't write anything. Please pay attention. Sine 30 degree perpendicular for sine 30 is 1, right? Yes or no? Perpendicular for sine 30 is Yes. sine Yes, BC, sir. right? So it is BC upon AC. So it is 1 upon 2. I hope you understood. This is perpendicular upon hypotenuse. Understood or not? Yes, sir. Sir, can you explain again? या बेटा देखो साइन थीटा क्या होता था. यहाँ चलते हैं ना फर्स्ट स्लाइड में. साइन थीटा होता था, यहाँ देखो ध्यान से. साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. होता था या नहीं? परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के ऑपोजिट वाला साइड. ठीक है. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा. तो इस ट्रायंगल में क्या हुआ देखो. साइन 30 क्या है? ये है. इसका ऑपोजिट साइड क्या है? 1. परपेंडिकुलर इज 1, राइट? और हाइपोटेन्यूज इज 2. So that's why it is 1 upon 2. This is how we get the 1 by value. 2. Sorry, Okay. Okay, sir. समझ आया बेटा? चलो गुड. Yes, cos sir. 30 cos 30 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 3/2, है ना? अब इसी में मैं पूछूं अगर आपसे कि साइन 60 क्या होगा, तो देखो तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें ट्रायंगल याद है तो. साइन 60 क्या होगा? रूट 3/2 फॉर साइन 60 फॉर 60 डिग्री एंगल. परपेंडिकुलर साइड इज ए बी. यस और नो? For 60 degree angle, perpendicular side is AB. Hypotenuse is 2. Understood? So that is how we write this. Then comes cos 60 degree. This is 1 upon 2. अच्छा, अब sin 45 क्या होगा बच्चों? Sin 45 will be 1 upon root 2. What will be cos 45 degrees then? It's again 1 by root 2. So I hope all of you understood how to write sin, cos, tan and all. Yes or no? Tan Yes, is sir. simple. Tan 30 degree Yes, अगर sir. लिखना है तो सिंपल है. इट साइन अपॉन कॉस कर लो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो. दिस बिकम्स 1 अपॉन रूट. इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, नोट इट क्विकली. इस पर समझना नहीं था, इसमें याद करना है. तो याद कर लो, ज्यादा आसानी है.
ट्राइंगल्स याद रखना बस, और कुछ नहीं। बाकी साइन कॉस कहाँ से आता है तुम्हें पता है, ठीक है। थोड़ा अलर्ट मोड पे बैठो, फटाफट लिखो बेटा। Done. चलो, so if you have noted it, let's move to write the trigonometric table. आप लोग इसको मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब देखो, तुम्हारी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी इफ यू हैव मेमोराइज दोस ट्रायंगल्स, ठीक है। यू विल अप्रिशिएट इट। सो draw these lines. This is for 0 degree, 30, 45, 60. We are writing the trigonometric values of standard angles of first quadrant and all the reference angles. So 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 and 360. ठीक है। You can draw the table with me. So it's a column of 9, 4, 4, 8, 1, 9, 9 and 7. ठीक है। So this is for functions. This is 0 degree, 30, 45, 60, 90, 180, 270 and 360. So this is sine, cos, tan, cosec, sec and cot. इधर देखो बेटा, टेबल अब बना लेना बाद में, अभी देख लो इसको एक बार फिल कर लेते हैं। दो रो, पहले दो रोज देख लो, उसके बाद तुम लिखना, ठीक है। 3 रोज, फर्स्ट 3 रोज। सो साइन 0 इज व्हाट, 0। साइन 30 1/2, अभी देखा पीछे आप लोगों ने, है ना। साइन 45 इज 1/√2। साइन 60 इज √3/2। साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1। ये याद करना पड़ेगा आपको, 1 0 -1 और ये 0 होता है। cos 0 is 1. I'll just write another color, or I use another color. Cos 0 is 1. Cos 30 is √3/2. Cos 45 is 1/√2. This is 1/2. This is 0. This is -1. This is 0. This is 1. ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका tan. Tan is nothing but sine upon cos. So this is 0. This is 1/√3. This is 1. This is √3. This is not defined. This is 0. This is not defined. This is 0. Clear? समझ आ रहा है आप लोग को? एनी फ्रैक्शन 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में 0 आया तो कोई भी फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको मैंने नॉट डिफाइंड लिखा है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। यस और नो? ओजस, सबसे छोटा Yes. बच्चा Yes, अगर sir. समझ आएगा तो सब बाकी सबको भी समझ में आएगा। ओजस को समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। शाबाश। कॉजेक में क्या लिखेंगे? कॉजेक थीटा इज 1/sin थीटा। सो जस्ट इन्वर्ट द साइन पार्ट। ऐसे ही सेक थीटा इज 1/cos थीटा। All of you draw the table and fill these 3 rows on your own. Do it quickly. ये जो लास्ट के 3 रोज है आप लोग को भरने हैं, भरिए इसको। इनवर्स लिखना है और
then I will fill it. बच्चों थोड़ा सा फास्ट करना है बेटा, हाँ। ये सब तुम आसानी से कर लोगे, मुझे पता है। अगर आप, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले स्लाइड से, यू आर डूइंग वेरी गुड। See, this is entirely a new topic to you, but the way you are responding, it's very good, right? It's awesome. So, hats off to all of you. Sir, I want to ask something. हाँ पूछो। Sir, in the previous slide, we have written tan 30 and there will be tan 60 and tan 45 also. Obviously, obviously, यहाँ पे है ना बेटा, देखो tan 45 यहाँ पे 1 है ना, Yes, sir. tan 60 भी √3 है। Okay, sir. I hope you understood how to read this slide, ये टेबल, Yes, sir. है ना। Yes, sir. साइन पढ़ना ये ऐसे, sin 30 ये ऐसे आएगा, sin 45 इधर, sin 60 इधर, है ना। Okay, sir. सेम वे यू हैव टू रीड दिस। Right, sir. Please fill the 3 rows quickly. And once you have done filling it, just say done. Type done in the comment window. थोड़ा सा बेटा फास्ट लिखना है, हाँ, क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, बट थोड़ा सा तेज। चलो, आई होप। अच्छा ओजस, कौन सा रो तीनों में सर से? 90 तक के ही बन रहा है, 180 के आगे नहीं आ रहा। 180 में बेटा इन्वर्स करना है ना, रेशियो नहीं लेंगे। कॉजेक क्या है बेटा? कॉजेक 1/sin थीटा। तो देखो कॉजेक
में cosec 0 क्या हो जाएगा? 1/sin ये वाला एंगल. Sir, after 90, I think the numbers will be same. सॉरी, Sir, after 90, the numbers will be same. नंबर्स विल बी सेम. अच्छा देखो, चलो आओ देखो, मैं कॉजेक भर रहा हूँ, ठीक है. कॉजेक को फिल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए सब लोग. कॉजेक क्या होता है बेटा? 1/sin होता है. तो इस सारे रो को इन्वर्ट कर दो. इन्वर्ट मतलब समझते हो, उल्टा करना है. 1/, तो क्या करेंगे? 1/0 नॉट डिफाइंड. 1/2, 1/1/2 2 हो गया. 1/√2 √2 हो गया. 1/√3/2 2/√3 हो गया. 1/1 1 हो गया. 1/0 नॉट डिफाइंड हो ऊपर गया. वाले रो का इन्वर्स करना है क्या उसमें? हाँ, लिखा है ना, ये ओ देखो. दो। 1/sin ठीक, थीटा. ठीक है सर, समझ गया। मैं तो लिख के दिया था तुम लोग को, है ना. चलो आओ, शाबाश. सेक भरेंगे अब. सेक इज व्हाट? 1/cos. सो दिस इज 1 2/√3. SB यादव, समझ आया आपको कि नहीं आया? Yes, sir. 1/0 is again अंडर। not defined. This is -1 not defined 1. Cot 1/tan होता है. कितना होगा ये? Not defined √3 1 1/√3 0 not defined 0 not defined. समझ आया नहीं आया? नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से. Nandita, you understood? Nandita, Nitya, Asad. यस सर. Nandita, you are in which standard? सर 9th. Sir. Nine. Okay, good. Nitya, you are in which standard? 7th sir. 7th. You joined late, Nitya. Yes sir. No worries. I'll send you. You have you send me the details of your parents' mobile number and name. Yes sir. Okay, I'll send you the. If you have sent it to me in the chat window, I'll send the Yes sir. recording to you. Okay, don't worry. Watch the recordings and clear your doubts. Okay. Okay. So now, once you have noted this trigonometric table, this is the most important part of today's session. All of you, please leave your pen and notebook aside, keep it aside and focus here. सब लोग ध्यान देंगे भैया, ठीक है. कोई कुछ नहीं लिखेगा. प्लीज ध्यान से सुनो मेरी बात. देखो, we are not aware about the trigonometric values of the standard angles of second, third and fourth quadrant, है ना. सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन सा था? 120 135 150. टेबल में है क्या? नहीं है. देखो, नहीं है ना. तो this is what we will learn now to find the trigonometric values of the standard angles of the second, third and fourth quadrant. ठीक है. We first step 1, we write the angle, right? जो भी एंगल हमें दिया हुआ है, that is the angle as a sum of the standard angles of the first quadrant and the smaller reference angle. By this time you know the difference between standard angle and reference angle.
है ना। और write the angle as a difference between the larger reference angle and the standard angle of the first quadrant। ठीक है। अब देखो ये क्या है। सबसे पहले तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, द एंगल का मतलब क्या हुआ। तो प्लीज पे अटेंशन, द एंगल इज द एंगल विच वी आर डीलिंग विथ। ठीक है। सो नाउ सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि आप साइन 120 डिग्री निकालना है आपको। प्लीज पे अटेंशन बेटा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो 120 डिग्री इज द एंगल फॉर अस। ये द एंगल है। ठीक है। वी कैन राइट इट, दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट? Rashi, this angle Second. lies in which quadrant? Second. Second Second. quadrant. Which is the smaller reference angle of the second quadrant? 180. 90. 90. So I can write this as 90 plus 30 degrees. Yes or no? Yes. Yes. Or or I can write it as sine 180 degree minus 30 degree. That is the larger reference angle minus the standard. Sorry, 180 degree minus 60 degree. Minus 90. 60. 120 है ना? Understood? All of you. हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अरे बाकी जनता Yes, जागो। sir. गुरनूर सिंह Yes, जी। sir. Yes. Yes, sir. हम्म। So this is the reference angle, okay, and 60 and 30 are the standard angles of the first quadrant. ठीक। Now the next step. But before I move to next step, I'll tell you something else. 90 degree into 1, 90 degree into 2, 90 degree into 3, 90 degree into 4. These are 4 different reference angles. Yes or no? 90, 180, 270 एंड 360, ये चारों अलग अलग रेफरेंस एंगल्स है। हाँ या ना बोलिए जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज एन ऑड number, this is an odd number, so I can say 180 and 270 are odd multiples of 90 degrees. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly 180 and 360 are even multiples of 90 degrees. Yes or no? Yes. Yes, sir. क्लियर है भाई सबको? गुरनूर, नित्या, नंदिता, एस डी Yes, sir. यादव। Yes. Sir. So this is an odd multiple, this is an even multiple, right? So remember this, it will help us in further। चलिए यहां से चलते हैं आगे। So now the third step is if the reference angle is an odd of 90 degrees, then the sine of the angle converts to the cos of the standard angle। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, साइन ऑफ द एंगल कन्वर्ट्स टू कॉस ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है।
ऑड मल्टीपल कौन है बेटा इसमें? ये वाला है कि नहीं? अरे प्लीज से यस और नो. दिस इज ऑड मल्टीपल, राइट? Yes, sir. दिस इज द एंगल. यस और नो? दिस इज द एंगल. इसका साइन किस में कन्वर्ट होगा? इट विल कन्वर्ट टू कॉज ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल. कौन है? दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल. यस और नो? यस सर. तो ये हो जाएगा cos ऑफ दिस 30 डिग्रीज. सो साइन 120 डिग्री सेम एज cos 130 डिग्रीज. क्लियर? यस सर. Yes, अब sir. एक और एग्जांपल देता हूं. साइन 150 डिग्रीज, ये क्या होता है? साइन 90 + 60 लिख सकता हूं इसको मैं. Yes, sir. अगेन दिस ऑड मल्टीपल. अगेन दिस इज एन ऑड मल्टीपल. सो साइन ऑफ द एंगल will convert to cos of the standard angle. This is the standard angle here. Yes or no? You know what is cos 30? It's √3/2. You know what is cos 60? Is 1/2. टेबल में देख के निकाल सकते हैं. समझ आया रूल सबको? हाँ ना बोलेंगे जल्दी से. Yes, sir. यस अरे सर. बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं. नंदिता, गुरनूर, असद. Sir, can you Yes, sir. explain once Yes, again? sir. असद, which part? Sorry, गुरनूर, which part you didn't understand? Sir, sin 150. कौन सा? Sir, this example only, sin 1. साइन 120 और 150? 150, 150. 150 को क्या लिखा बेटा? 90 + 60 लिख सकते हैं. Yes, sir. 90 ऑड मल्टीपल है. Uh, yes, sir. 90 ऑड मल्टीपल है तो साइन ऑफ 150 विल कन्वर्ट टू कॉस. पहले तो साइन विल कन्वर्ट टू कॉस. कॉस किसका होगा? स्टैंडर्ड एंगल का. स्टैंडर्ड एंगल कौन है बेटा यहाँ पे? 60. 60. तो Okay. कॉस 60 हो जाएगा. Okay, समझा? sir. Yes. एक और करेंगे. साइन ऑफ, देखो सब लोग ध्यान से, साइन ऑफ 240. आई विल राइट इट एज साइन ऑफ 270 -30 डिग्रीज. लिख सकते हैं या नहीं गुरनूर? वी कैन राइट इट और नॉट? यस और नो? Yes, sir. सो 270 इज ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल? Odd. Odd. So sine converts to cos of what? 30 degrees. Clear? Yes or no? यस सर. Follow the rule. Follow the rule. Cos of the standard angle. गुरनूर समझ आया नहीं आया आपको? Yes, sir. Understood. पर 240 डिग्री lies in which quadrant? ओजस सोना नहीं है बेटा. 240 डिग्री lies in which quadrant? Third. थर्ड. साइन की वैल्यू नेगेटिव होती पॉजिटिव होती थर्ड क्वाड्रेंट? Negative. तो नेगेटिव साइन यहां लगाना है. समझ आया? साइन मिस नहीं करना है. नेगेटिव साइन जरूर लगाना है. तो इसकी वैल्यू होगी -√3/2. सो साइन 240 इज नेगेटिव वैल्यू. पता है हमको पहले से. देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर. यस और नो? तो वी हैव Yes, sir. टू. गुरनूर, नंदिता, ओजस, Yes, sir. असद. अंडरस्टूड सर. यस. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, राइट? नाउ द लास्ट रूल. अच्छा इसी में एक और है. तो साइन अगर होगा तो कॉस होगा तो क्या होगा? कॉस विल गेट कन्वर्ट टू साइन. सो कॉस ऑफ द स्टैंडर्ड कन्वर्ट्स टू साइन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल. ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं. देखो ये जो सेम कलर का है ना, इसको एक ये साइन कन्वर्ट्स टू कॉस, और ये जो कॉस है कॉस कन्वर्ट्स टू साइन. ठीक है. ये ध्यान रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कॉस 150. देखो इधर ध्यान से. कॉस 150 क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 + 60 लिख सकते हैं. हाँ ना बोलिए सब लोग. Yes, sir. ये ऑड यस. मल्टीपल. ऑड मल्टीपल है. ऑड है तो कॉस को क्या लिखेंगे? साइन. Sine 60 degree. ये कौन से क्वाड्रेंट में है? बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है राशि? First. First. 61st क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. 90 से 180 के बीच में ना 150. सो दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है पॉजिटिव? गुरनूर. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है पॉजिटिव? गुरनूर. Sir, positive.
नहीं नहीं, सेकेंड पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव, सो दिस इज -√3/2। थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, ऑल साइन टैन कॉस, राइट, पर याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप लोगों ने देखो एक्सरसाइज आप लोगों ने परफेक्ट किया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एवरी स्लाइड यू हैव डन सम एक्सरसाइजेस, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट इट। ओके, नाउ द लास्ट रूल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, राइट? यस फोर्थ वन, नाउ इफ, ये आसान है, इफ द रेफरेंस एंगल is an even multiple of 90 degrees, then the sine or cos of the angle converts to the sine और cos। इसमें फंक्शन नहीं बदलता, फंक्शन सेम रहता है, cos of the स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, लास्ट में एक स्टेटमेंट जेनरिक है, पुट appropriate sign in front of the values obtained according to the quadrant in which the angles lie। ठीक, ये साइन लगाना मैंने आपको सिखाया है, देखिए ध्यान से, इधर आइए। अच्छा ये शिफ्ट हो गया, एक सेकंड है बेटा। साइन, अबे नहीं, कॉज, द सेम कलर शुड बी रेड इन वन स्टेटमेंट, ठीक है, एंड व्हेन द कलर चेंजेस मेक अ न्यू स्टेटमेंट। यहाँ देखो बेटा, इसको देखो सब लोग, ये सेकंड वाले एग्जांपल को यहाँ देखो। दिस रेफरेंस एंगल इज एन इवन मल्टीपल, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. यस Yes. सर। तो साइन 180 - 60 क्या हो जाएगा? साइन रिमेन साइन सिंस इट्स एन इवन मल्टीपल। साइन किसका होगा? ये 60 डिग्री का होगा, खत्म कहानी। साइन 60 क्या होता है? टेबल देखो और निकालो, √3/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन रखना है यहाँ पे। इसको देखो साइन 150 को, आई कैन राइट इट एज साइन 180 -30 डिग्रीज। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? साइन रिमेन साइन, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, सो दिस बिकम्स 1/2। इसको देखो, ये 240 था ना, ये मैं हटा देता हूँ, ये तो लिख ही दिया हम लोगों ने ऊपर उसको, -cos 30 डिग्री, दिस इज -√3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 +60 डिग्रीज। चेक करो बेटा सब ध्यान से, चलो ओजस से सॉल्व करवाते हैं। ओजस, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल? सर ये वाला फोर्थ वाला समझा नहीं मुझे। कौन सा? फोर्थ वाले में क्या करना है वो नहीं वही तो समझा। करवा रहा हूँ तुमसे, आओ इधर आओ। ये साइन 180 +60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं इसको, 240 को? हाँ सर। तो ये इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है? इवन। इवन मल्टीपल है 90 का। तो इवन मल्टीपल जब रहेगा, ध्यान से सुनना बेटा, इवन मल्टीपल जब रेफरेंस एंगल होगा तो साइन साइन ही रहेगा, यही लिखा है फोर्थ वाले में। ठीक है, ओजस हाँ या ना? नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं है, देखो अगर ये इवन रहेगा तो साइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। ये क्लियर है या नहीं है? हाँ हाँ सर ये क्लियर है समझ। ना? अब किसका साइन होगा ये? इसको एंगल चाहिए कि नहीं?
इसके सामने एंगल नहीं है तो कोई काम का नहीं है ये। किसका साइन होगा? तो ये स्टैंडर्ड 60. एंगल का साइन होगा, साइन 60 हो जाएगा ये। 60. समझा? हाँ सर. बाकी सबको समझ में आया कि नहीं? गुरनूर, असद, Yes, Yes, sir. sir. नंदिता। यस सर. देखो सबसे छोटा बच्चा समझ गया ना क्लास में, तो बाकी सबको समझ में आ जाता है। तो साइन 60 क्या होता है बेटा? साइन 60 होता है √3/2। ये एंगल, इधर आइए ओजस जी, अभी जाइए मत आप, इधर देखिए ध्यान से। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है ओजस? सेकेंड. नहीं नहीं, सेकंड कैसे? सेकंड होता था थर्ड 180 180 से में। 270 के बीच. थर्ड में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है ओजस? साइन नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव. होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन डालेंगे। क्लियर? से यस और नो? यस. वेरी गुड। राशि, नंदिता, गुरनूर, असद, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अंडरस्टूड सर. Yes, sir. शाबाश। सो दिस इज द फोर्थ रूल। ठीक है, एक कॉस का भी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर वी विल मूव अहेड, राइट? ये कॉस 150 करते हैं, ट्राई। cos 150 can be written as 180 minus 30. This is an even multiple. So cos remains cos because it's an even multiple, cos of 30 degrees. But since this angle lies in second quadrant, and in second quadrant cos is negative, so we put a minus sign here. Cos 30 is √3/2, so this is minus √3/2. So the answer matches with the first answer. Yes or no? Ojas, Rashi, Asad, यस सर. Pur and Nandita. चलो, यस सर. you have understood it. Please make notes. इसको लिख लो जल्दी से सब लोग, टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, बट देखो समझाना तो पड़ेगा ना। Sir, हाँ बेटा, नंदिता बोलो। sir, we write minus sign in this, sir, but in trigonometry table we are not write minus sign, sir. Because in trigonometric table we are not dealing with second, third and fourth quadrant. We are writing minus sign in cos 180. देखो, we are writing it here, minus sign, minus sign. Can you see? Yes, sir, but since it since But 60 is minus 3/2, sir, minus 3/2, sir. In trigonometry it is positive. In another slide it nothing. is minus. Yes, sir. Sine In this. 240, sine 240 is negative. Okay, Yes, sir. Nandita. But sine 60 is positive. Okay, sir. You understood this or not? That's why, that's why we have written all sine tan cos. ये देखो, we have written this, right? So according to the quadrant, the signs will change. Understood, Nandita? Yes, sir. Sir, in trigonometry table, we are use only first quadrant, sir. Yes, 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 yes. Okay, sir. Understood. That's why we are doing this exercise, na? How to find these angles of these values for the second, third, and fourth quadrant. That's why this entire rules are there. Okay? Sir, we are not use third, second, four. We are not use second, third, fourth quadrant in trigonometry table, sir. Like first trigonometry table. We are not using second, third, and fourth. We are not writing that in Okay. table because table will become huge then. Okay, sir. है ना? So that's why we are devising this technique to find these values now. Okay? Yes, sir. Clear. Very good. Very good. Nandita, you are in which standard? 9, sir. Ninth. Okay. So you will understand. Don't worry.
Once you have noted it, please type done, huh? Okay, Ojas says he has done. Rashi, Asad, Gurnur, Nandita. Noted बेटा? No, sir. अच्छा लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। ओजस तुमको समझ आया है? Yes, sir. शाबाश। तो अभी होमवर्क बताऊंगा तो कल करके देना है, ठीक है वो? हाँ सर। कल रात को 10 बजे तक, ठीक है? तो करना क्या है, फाइंड, लिखो कॉपी में लिखो, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ all the standard angles of second, third, and fourth quadrant. So there are 9 angles, 9 into 3. Sin, cos, tan बस निकालना है। तो 27 वैल्यूज निकालनी है, उसमें से 4-5 हमने कर लिया है, नहीं 8 कर लिया, 8 वी हैव डन, रेस्ट यू हैव टू डू। Sir, can you repeat the statement? Yeah, I'll write it, don't worry. You ना guys just note it and I'll tell you what to do. ये नोट कर लो बेटा पहले। Complete this slide. Finish. Nandita says done. Nandita, you understood now what is in this Yes, slide? sir. Okay. Gurnur noted. Yes, sir. Okay. Asad noted. Yes, sir. Rashi. Yes, sir. ठीक है. So this is your homework for, but homework submit करने का टाइम है कल तक 10 बजे तक करना है, तभी I'll entertain all your doubts and then only I'll check only, ठीक है? Find the trigonometric values. By trigonometric values I mean sin, cos and tan only. Find the trigonometric values of all the standard angles of the second, third and fourth quadrants. ठीक है, इसमें लिख लो only sin, cos and tan is to be found. There will be 27 values, few of which we have done, 4 or 6 we have done. Rest, please send it by 10 p.m. tomorrow to this number. This is my DM me. This is my number 9574375555. आप यहाँ भेजिए. I will check it. And if you have committed any mistakes, I'll guide you. ठीक है? सर हर हर एंगल क्वाड्रेंट में 3 ही एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स रहते हैं ना? हाँ बेटा, हाँ, ठीक है, चलो। तो if all of you can now switch on your cameras, kids, Asad, Nandita and Gurnur. राशि, कैसा रहा बेटा सेशन, समझ आया तुमको? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री पहले से पता था? नहीं, पहले नहीं। पहले से नहीं पता था ना? और आज समझ में आया? नाम सुना था। सॉरी? हाँ, पहले सिर्फ नाम सुना था पर कंसेप्ट नहीं पता था। वेरी गुड। ओजस, व्हाट अबाउट यू? सर नाम पता था लेकिन इसका यूज क्या है डेली लाइफ में? यूज क्या है? यूज देखो, जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे ना, ट्रायंगल्स और एंगल्स की, तब इसका काम आएगा, ठीक है? जैसे जैसे बिल्डिंग की कोई हाइट निकालनी है, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फीट फुट से तुम्हारा डिस्टेंस पता है तुमको,
और तुमको एंगल पता है कि ये एंगल सस्टेन कर रहा है ये बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट तुम ऐसे ट्राइंगल से निकाल सकते हो, है ना। तो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे यूज हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, यू हैव बीन जस्ट इंट्रोड्यूस्ड। पर आज जो पढ़ा वो समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। असद, कौन सी क्लास में हो तुम? सर 7th। 7th में हो। तुम छोटा बच्चा है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया आज का? यस सर, आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले कभी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री? सर ट्रिग्नोमेट्री उतना तो नहीं पढ़े थे, हमारे क्लास में होता थोड़ा बहुत। ठीक है। गुरनूर, व्हाट अबाउट यू? I understood, sir. You understood, but you have done it before? No, sir. No? Very good. Nandita, Sir, I understood. you did it before? No, sir. Now, kids, one thing which I want to give a feedback about all of you is, you guys have initially you didn't interact. Few of you interacted, but most of you didn't interact. But towards the later part of the session, all of you interacted. So this is the best part. Please keep it up. Okay? Maintain it. Always, whenever you want to learn something, you have to interact. ठीक है? कोई भी टीचर, any teacher who is teaching you, they will not refrain you from asking questions, right? Gurnur? ठीक है? Nobody will refrain you from asking any questions. Nobody will stop you from asking any questions. तो जब भी, whenever you want to ask, whenever you have doubts, ask. कितना बताना है वो टीचर डिसाइड करेगा, कहाँ तक बताना है डिपेंड करता है, पर वो टीचर तुमको एक रीजनेबल आंसर जरूर देगा। ठीक है? तो सीखने का सबसे पहला कंडीशन, यू हैव टू बी इंक्विजिटिव, यू हैव टू आस्क, सर ये समझ नहीं आया, प्लीज फिर से बता दीजिए। पूछा ना आप लोगों ने आज, तो ये बेटा इसको इंट्रैक्शन में लाओ, इसको हैबिट में लाओ। कैमरा ऑन, ऑनलाइन क्लास का पहला रूल, कैमरा, माइक और स्पीकर या हेडफोन, ईयरफोन, ये जरूर अच्छा होना चाहिए, और इंटरनेट ऑफ कोर्स। ये चार चीजें तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी क्लास का मजा आएगा तुम। और ऑब्वियसली सीखने की इच्छा है तभी तुम सामने बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठोगे, है ना। आज तुमने जो पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव लर्न टूवर्ड्स द लास्ट स्लाइड, ये 11th में पढ़ते हैं बच्चे, और बहुत सारे 11th वालों को भी ये नहीं पता होता है शुरू में। तो तुमने जो सीखा है 8th में, 7th में, 9th स्टैंडर्ड में, दिस इज वे बियॉन्ड योर स्टैंडर्ड, राइट, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स। पर you have done it nicely. You understood? Yes, or no? All of you understood the topic. यस So सर। यस सर। you are kids of above average intelligence. The only thing is you have to be inquisitive. पूछना है, समझना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी करने के लिए सब टीचर टाइम देंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे वी लर्न, राइट। We will be interacting with your parents. My team will call, they will tell us about, give them the, I will give them the feedback, they will give the feedback to the parents, right? और उसके बाद also I'll send the recording, I'll upload this in the YouTube and you can see was the recordings later. ठीक है? Please do the homework. कल सुबह तक कर पाऊंगा बेटा, आज नहीं कर पाऊंगा, तो please do the homework before 10 p.m. tomorrow. ठीक है? Do it. करेंगे आप लोग? It will take 15 minutes, not more than that. ठीक है? Sir. करेंगे ना, हाँ या ना बोलिए, यस और नो? यस Yes. सर। Very good. So thank you so much, kids, Yes, for your sir. precious time. Thank you so much. It was fun teaching all of you, right? You are bright kids. So I wish you all the best for whatever future endeavors you take. ठीक है? Do well. ठीक है? God bless you. Good night. Take care.